Hi friends, in this class we will understand a question based upon the measurement of loudness of sound. Loudness of sound is a subjective quantity and depends directly on intensity of sound. Intensity of a wave is the energy propagating per second per unit area perpendicular to the direction of propagation of wave. Now, if we come to the relation between loudness and intensity, then loudness, say I am representing it by L. Loudness depends upon intensity as L is equal to 10 log of I, intensity of sound, divided by threshold of hearing. Threshold of hearing means the intensity of sound that is just audible to normal human ear. Its value is 10 to the power minus 12 watt per meter square. So I naught is 10 to the power minus 12 watt per meter square and is called threshold of hearing. Now here in this question, what is asked from us? He is saying a hearing test is conducted on an aged person. It is found that her threshold of hearing is 20 decibel at 1 kilohertz and it rises linearly with frequency to 60 decibel at 9 kilohertz. 9 kilohertz पे 60 decibel है, 1 kilohertz पे loudness 20 decibel है और ये वेरिएशन लीनियर है. तो इसका मतलब अगर हम प्लॉट करें on the graph, तो here loudness on vertical axis and frequency on horizontal axis, it is given that for 1 kilohertz the loudness is 20 decibel and for 9 kilohertz frequency I am measuring in kilohertz, loudness I am measuring in decibel. So for 9 kilohertz the loudness becomes 60 decibel. अब ये वेरिएशन है लीनियर वेरिएशन और अगर लीनियर वेरिएशन है तो ग्राफ बिटवीन लाउडनेस एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट कम आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया तो हमसे सबसे पहले पूछे है उसने कि व्हाट इज द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट द पर्सन कैन हियर एट 5 किलोहर्ट्ज. तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द लाउडनेस एट 5 किलोहर्ट्ज. अगर हम 5 किलोहर्ट्ज पे लाउडनेस की बात करें तो ये मान लो 5 किलोहर्ट्ज और हमें लाउडनेस चाहिए L1 मान लेते हैं. इस लाउडनेस को अगर L1 मान लेते हैं तो L1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यूज करना है स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ. अगर स्लोप की बात करें और फर्स्ट टू डाटा से स्लोप निकालें तो दैट विल बी change along vertical axis, that is L1 minus 20 upon corresponding change along horizontal axis, that is 5 minus 1. This is equal to, अगर फर्स्ट और लास्ट डाटा से स्लोप निकाली जाए तो दैट विल बी चेंज along vertical axis means 60 minus 20, corresponding change along horizontal axis 9 minus 1. This means L1 minus 20 is equal to 5 minus 1 is 4. 4 upon 8 into 60 minus 20 will be 40. So 4 to the 8 and 40 by 2 will be 20. So L1 will be 20 plus 20, that is 40 decibel. अब हमसे पूछा क्या है उसने, then the minimum intensity of sound that the person can hear at 5 kilohertz. तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट 5 किलोहर्ट्ज इज टू बी फाउंड. अगर 5 किलोहर्ट्ज पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड चाहिए तो सबसे पहले 1 किलोहर्ट्ज पे देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी है. क्यों? क्योंकि हियर इन द आंसर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट 5 किलोहर्ट्ज इज टू बी कंपेयर्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट 1 किलोहर्ट्ज एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट 9 किलोहर्ट्ज. तो अगर 1 किलोहर्ट्ज पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड देखें तो फॉर 1 किलोहर्ट्ज निकाल लेते हैं रेशो आई अपॉन आई नोट का. आई अपॉन आई नोट का रेशो निकालने के लिए log ऑफ आई अपॉन आई नोट, हियर बेस ऑफ लॉगरिथम इज 10, सो log ऑफ आई अपॉन आई नोट इज इक्वल टू लाउडनेस अपॉन 10 एंड at 1 kilohertz loudness is 20 decibel.
So 20 by 10 and this implies I by I naught is equal to, क्या करना है, इस logarithmic expression को exponential में बदल देना है 10 raised to the power 2. Logarithm of a number at the base is 2. So base raised to the power value is equal to I by I naught. So 10 to the power 2 means 100. Now अगर हम इंटेंसिटी निकालें 9 किलो हर्ट्ज पे, तो फॉर 9 किलो हर्ट्ज log of I by I naught is equal to, what is the loudness at 9 kilohertz, that is 60 decibel. So 60 by 10, 60 by 10, this implies I upon I naught is equal to 10 to the power 6. Now if we find out the value of I by I naught for 5 kilohertz, then for 5 kilohertz log of I by I naught is equal to loudness divided by 10. Loudness at 5 kilohertz is 40 decibel, so that will be 40 by 10, and this implies I by I naught is equal to 10 to the power 4. अब अगर हम कंपेयर करें I by I naught at 5 kilohertz को I by I naught at 1 kilohertz से, तो then that will be 10 to the power 4 divided by 100. तो it means I by I naught at 5 kilohertz upon I by I naught at 1 kilohertz is equal to 10 to the power 4 divided by 100, that is 100. It means the minimum intensity of sound at 5 kilohertz is 100 times the minimum intensity of sound at 1 kilohertz, and hence the answer C should be the correct answer. Now if we compare it with the intensity at 9 kilohertz, then that will give us 10 to the power 4 divided by 10 to the power 6, and that will be 10 to the power minus 2, that is 0.01 times. तो और 0.01 जैसा कोई आंसर यहाँ नहीं है.